So today we are going to understand about the sign convention for lenses. So for both the kinds of lenses, concave and convex, how the sign convention used to work and how we can use these values to do our lens formula. And with the help of lens formula, we will understand that how to solve the numericals. So first, let's start with the sign convention. तो सबसे पहले sign convention देखते हैं. इसको कॉपी में ड्रॉ कर लेना और जिस तरह से ये साइन कन्वेंशन के वैल्यूज हैं उसको ध्यान से समझ लो. इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ पे पॉजिटिव होना है, कब नेगेटिव होना है, ये सब चीज थोड़े से ध्यान रखना है. और इस चीज को अगर एक बार समझ लोगे तो इजीली तुम लोगों को न्यूमेरिकल बनाने में इजी हो जाएगी. ठीक है, so let's start. So all of you please draw this figure and please put all the values as I'm giving over here. Okay, so let's start. So I will start with the convex lens. ठीक है, तो convex lens के help से ही हम यहाँ पर इसको करेंगे. So just to draw a convex lens, okay, and put the principal axis line which is dividing the ends. ओके अब यहाँ पे तुम लोगों को करना क्या है कि तुम लोगों को एक इमेज बनानी है. ठीक है, वैसे तो कोई भी इमेज लिया जा सकता है, लेकिन आई वुड रिकमेंड दैट वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, उस वाले इमेज को लेना तो ज्यादा अच्छे से तुम लोगों का यहाँ पर ये बन सकता है. सो हियर आई एम कीपिंग द ऑब्जेक्ट ओवर हियर. सो द फर्स्ट लाइट रे इज गोइंग टू कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ पर पहली लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी. And as we know this thing that it will refract through the focus to the other side. Okay, तो ये दूसरे साइड के फोकस से होते हुए क्रॉस कर जाएगी. And for the second ray we will take it from the optical center. So over here the second ray is going to be like this. Okay, so I will bend it a little bit more over here so that the image can be a little short. Okay, so here would be this would be perfect. Now here our image is going to form where that intersection is happening. Okay, so in this one, now let's name all the points, whatever the points are required for us. So here we can have our first focus f1, and here we can have our second focus 2f1. And similarly over here, this is our f2, and this one will be our 2f2. Okay, so please mark all the things properly. After doing this one, you just put the arrows, as I said earlier also in the image formation. This arrows are very important. यहाँ पे ये arrows अगर तुम लोग नहीं दोगे या वहाँ पे अगर तुम लोगों की छूट जाती है तो तुम लोगों की फिगर इनकम्प्लीट रहेगी और वहाँ पे टीचर हो सकता है मार्क्स नहीं दे बोर्ड एग्जाम में. तो फिलहाल इस साल के लिए तो ये वाली चैप्टर नहीं आएगी तुम लोग के बोर्ड एग्जाम में, लेकिन फिर भी तुम लोग को याद रखना है फॉर द सेक ऑफ क्लास 12. ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये इमेज फॉर्मेशन बना लिया है. अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों को जानने की जरूरत है. तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ और नेमिंग कर देते हैं. हम ऑब्जेक्ट का जो नेमिंग है वो AB से कर रहे हैं और इमेज का जो नेमिंग है वो हम PQ से कर रहे हैं. ठीक है, अब इसको फर्दर लेके जाने से पहले, साइन कन्वेंशन को और थोड़ा सा अच्छे से समझने से पहले, यहाँ पर हम लोग दो और लाइन ड्रॉ करेंगे. And these lines will be the lines of the graphical representation what you used to be drawn while you used to go for the different graphs. जब तुम अलग अलग तरह के ग्राफ बनाते हो तो वहां पे जब तुम लोग इस तरह के लाइन ड्रॉ करते हो तो वो लेना है. तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को बेसिकली हमको यहाँ पे दिखाना है. तो ये जो हम लोग की प्रिंसिपल एक्सिस है, वो प्रिंसिपल लाइन है, वो यहाँ पर हम लोगों की एक्स एक्सिस बन जाएगी और जो लाइन सेंटर से क्रॉस कर रही है लेंस की वो हम लोगों की वाई एक्सिस बन जाएगी. तो तुम लोग यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हो एज अ एक्स एक्सिस एंड दिस वन एज एक्स डैश एक्सिस. ओवर हियर दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश. अब यहाँ पर हम लोगों को, जैसे कि हम पहले तुम लोग को बता चुके थे, साइन कन्वेंशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेते हैं. तो क्या क्या टर्म्स हैं, लेट्स सी फॉर दैट वन. सो द फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू गो फॉर दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. जो सबसे पहले जो तुम लोगों को करनी है वो करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं. सो ऑब्जेक्ट distance. So object distance is equals to, that would be OB. Okay, so O I haven't given, so this is O. So OB जो होगी वो तुम्हारी object distance हो जाएगी. So ये जो है ये तुम्हारी object distance बन जाएगी.
तो यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम लोग दिखाते हैं यू से, इसको हम लोग यू से दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारी ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इट इज लाइंग ऑन एक्स डैश एक्सिस, और तुम लोगों को पता है ये जो वैल्यू होती है ये नेगेटिव में होती है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं तो ज्यादातर हम लोग ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड और ऑब्जेक्ट यूज्ड टू बी प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर। तो जब भी लेफ्ट साइड में रहेगी यानी एक्स डैश में रहेगी तो वो माइनस में होगी, तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पे समझना है। एंड दिस इज द OB. This is actually OB. So you can write over here as OB. So just a minute, I'll just put one more thing over here so that it will be easy for you to remember. So here it is equals to OB and this OB is equals to minus U. तो ये यहाँ पर minus U बन गया है, ठीक है। अब जो दूसरी चीज जो तुम लोगों को जाननी है वो जाननी है इमेज डिस्टेंस। सो इमेज डिस्टेंस, so image distance, so what would be the image distance over here? तो यहाँ पर अगर हम लोग image distance देखते हैं तो ये हम लोगों का निकल कर आ जाएगा इस पॉइंट से, तो O से Q तक की डिस्टेंस, O से Q तक की जो डिस्टेंस होगी वो हम लोगों की इमेज डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं OQ एंड दिस विल बी V, दिस विल बी V। अच्छा यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली बात है, सो जस्ट पुट अ नोट ओवर देयर, फॉर अ रियल इमेज, for a real image you will go for the positive V, you will go for a positive V, whereas for a virtual image it will be a minus V। okay, so this one is the important factor which you need to remember। तो यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं तो ये तो मेरी रियल इमेज बन रही है, तो रियल इमेज बन रही है thus it will come as positive, so this will positive V। But you have to remember this one also, that for the real we have the plus V and for the virtual we have the minus V। okay, now the next thing which we have to go for, that is the focus। okay, so in a concave or in a convex lens we have two focuses, हम लोगों के पास दो फोकस होती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि फर्स्ट फोकस के बारे में बात कर रहे हैं कि सेकंड फोकस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो जनरली हम लोग उस फोकस को ज्यादा कंसीडर करते हैं जिसके सामने में ऑब्जेक्ट रखी हुई होती है। तो जैसे कि अभी अगर हम देखते हैं तो ये F1 के सामने में ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यानी हम लोगों की जो फोकस होगी वो हम लोग यहाँ पर F1 से कंसीडर करना चाहेंगे। लेकिन जो ये वाला जो 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 कर्वेचर है उस कर्वेचर के लिए जो फोकस होगी वो हो जाएगी F2, क्योंकि तुम लोगों को पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस जो बनता है वो बनता है दो कंप्लीट स्फेयर को इंटरेक्ट करने के बाद। तो ये स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि ये जो पोर्शन निकल कर आती है, ये जो पोर्शन निकल के आती है, ये हम लोगों की लेंस बनती है, यही हम लोगों की लेंस बनती है और इसी लेंस को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो लेंस बनेगी तो इसके जो दोनों ही हिस्से हैं, इसके जो दोनों ही हिस्से हैं इसमें से अलग अलग फोकस निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सेंटर होंगे, एक सेंटर इधर से है, एक सेंटर इधर से है। तो इधर वाले कर्वेचर के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो सेंटर इस साइड आती है जो कि ये है 2F2, और यहाँ पर ये पॉजिटिव होती है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर एंड कीप इट इन माइंड। सो ओवर हियर यू हैव टू गो फॉर द फोकल लेंथ। नेक्स्ट वन इज द focal length। so focal length over here would be considered to be as the OF2 यहाँ पर कंसिडर करेंगे हम लोग। यहाँ पर OF1 भी सेम डिस्टेंस पे है, लेकिन यहाँ पर OF2 कंसिडर करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन पुट अप करना है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान देना है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय F, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय F एंड ओवर हियर फॉर द कॉन्वेक्स, for the convex lens if we go for that would be considered to be as positive, and for a concave lens it used to be negative। so please be remember this one। so convex lens के लिए हम लोग positive focus लेते हैं और concave lens के लिए हम लोग negative focus लेते हैं। so this is a very important thing which you need to remember। so यहाँ पर focal length के लिए जब हम लोग OF2 ले रहे हैं तो F यहाँ पर मेरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, so I hope everyone you are getting these things that what all the quantities are। so यहाँ पर अगर हम लोग देख लेते हैं तो फोकस को भी हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। so this is the focus over here। तो ये हम लोग ले रहे हैं।
अच्छा, अब ये सब हो जाने के बाद जब ये हो गई तब हम लोग यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ले सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी वैल्यू ले सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम लोग लेते हैं तो 2f2 से o का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टर्म में आएंगे जो कि हम लोगों को लेना है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो द नेक्स्ट थिंग इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। Okay, so height of the object, so that is going to be AB, so that is AB. So यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये y axis के तरफ होती है, so thus it will be considered to be as positive, and over here this is HO, this AB. Whereas to the other side we have to go for the height of the image. So for the image, if we will see, that is PQ. Okay, that is PQ, and PQ is equals to, here it is towards the y dash axis. ये जो y dash axis के पैरेलल बन रही है, इसलिए ये यहाँ पर नेगेटिव हो जाती है, तो यहाँ पर नेगेटिव HI नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर भी एक नोट डाउन करना है, फॉर अ रियल इमेज it used to be negative, and for a virtual image, अगर हम लोग वर्चुअल इमेज के लिए देखते हैं तो वहां पर वो पॉजिटिव बन जाएगी। सो प्लीज कीप दिस थिंग्स इन माइंड, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज अगर हम लोग लेते हैं रियल इमेज के लिए तो वो तो नेगेटिव बन रही है, लेकिन वर्चुअल इमेज के लिए वो पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है। सो आई होप यू ऑल हैड अंडरस्टूड दिस थिंग, एंड यू ऑल हैड रिटन आल्सो ऑल दिस थिंग्स, बट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क। If you are having any confusion, then you can ask. Otherwise, I will go to the lens formula with this one. लेंस फॉर्मूला का पूरा डेरिवेशन हम लोग करेंगे, उसके डेरिवेशन को समझेंगे कि कैसे लेंस फॉर्मूला बनता है। तो साइन कन्वेंशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन जस्ट आस्क डायरेक्टली, और अदरवाइज इफ यू आर हैविंग नो प्रॉब्लम देन वी कैन मूव टू द लेंस फॉर्मूला। सो डू एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो, नो। Okay, so then let's move to the next one. So over here we are going to see for the lens formula. So lens formula क्या है, उसमें किन किन चीजों को हम लोग को देखना है और उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हम लोग देख लेते हैं। तो लेंस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला को का डेरिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है for your further classes also, so you please be mindful for that one, and please be sure that you understand it in a good way. Okay, so let's start. So over here for proving the lens formula, we will just go for similarities. I hope you all have. It will be very easy for you all. Okay, so let's start. So first of all, we will go for by triangle ABO. देखो यहाँ पर ABO triangle तुम लोगों को दिख रही है, ABO triangle तुम लोगों को दिख रही है। यहाँ पर इस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PQO, इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में कैसे क्या हो सकता है, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो तुम लोग इसको रिवर्स में भी ले सकते हो, तुम लोग चाहो तो ट्रायंगल PQO और ABO को भी ले सकते हो। सो देयर इज नो एनी फाउंडेशन फॉर दैट वन, और एट द एंड ऑल्सो यू कैन राइट in the reverse way, so there is no problem. So over here you can go for this one, that angle ABO is equals to angle PQO. So over here both are 90 degrees, so both the angles are 90 degrees. So this is the first condition. The second condition is angle AOB is equals to, AOB अगर देखते हैं तो ये equal हो जाता है angle POQ के। So that is vertically opposite angles. Okay, so by AA criteria you can say this thing, that triangle ABO is similar to triangle PQO. Now as this PQO is the smaller one and ABO is the bigger one, so I'm just reversing
the name of the triangle. So it's not like that you can't do with this one also. You can, but just to make you understand only, I'm just reversing this situation. So I can write like this, that triangle PQO is similar to the triangle ABO. So it will be easy then. So if you will go with this one, then it will be much easy. If you will go for that one also, that would be also the same thing, because you all had studied this thing, that in two similar triangles the sides used to be in a proportion. So we are going to take that condition over here. तो हम लोग यहाँ पर उसी condition को लेंगे. तो यहाँ पर अगर ये दोनों triangles अगर आपस में similar हैं, तो हम लोग ये लिख सकते हैं PQ by AB is equals to PQ by AB is equals to OQ by OB. ठीक है, तो ये हो जाएगा. तो इसको हम लोग अभी इक्वेशन 1 लेके रख लेते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे हम लोग दूसरे पार्ट में देखते हैं कि क्या करना है. ठीक इसी तरह से हम लोगों को एक दूसरा ट्रायंगल भी लेना है. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जस्ट अ मिनट. सो नाउ लेट्स सी फॉर दिस वन. So here by triangle this PQF2, just see the figure PQF2. यहाँ पर इस वाले फिगर को देखो. अच्छा, यहाँ पर हम एक छोटा सा नाम कर देते हैं ताकि वो इजी हो जाए यहाँ पर. तो यहाँ पर जैसे O है, P है, X, say as this is X. Okay, so it will be good. So now this PQF2 and triangle XOF2. Just see the figure. In that figure you can easily recognize this triangle. Now over here the same kind of condition we can have. Angle PQF2 is equals to angle XOF2. So over here also both the angles are of 90 degree. So we can say for this one. Now the next one as angle OF2Q equals to angle XF2O. So here it will be vertically opposite angles. Now therefore you can say for this thing that by AA criteria, triangle PQF2 is similar to triangle XOF2. So therefore over here you can say for this thing that PQ by XO equals to F2Q by this OF2. Okay, so over here I'm just going to change a little bit over here. So see, PQ by, instead of this XO, I can write over here as AB. Why it is so? Because you can see that this AX is parallel to the principal axis, means BO. So when the lines are parallel, then they are equidistant from each other. So XO can be equals to AB. So it is equals to F2Q by OF2. So this one I'm going to take as equation 2. तो इसको हम लोग equation 2 ले लेते हैं. अब देखो यहाँ पर equation 1 और equation 2 में तुमको एक similarity मिल जाएगी. So here in the equation 1 you have PQ by AB, and in equation 2 you are having PQ by AB. So by equation 1 and 2, so by you can go for this thing. Just I'm writing to the side. So by equation 1 and 2, if we will go for both the equations, we can write it like this. This OQ by OB is equals to this F2Q by OF2. Okay, now we will go further with this one only. So let me just erase these parts so that it will be easy for you all to just go for this. 1 minute, please. Okay. So please, all of you, do these steps, whatever the steps are there. And these formulas are going to help you in your class 12th also. So in class 12, when you will go for optics,
optics chapter. So over there, these formulas are going to be useful. So derivations are not only for this class, but it is also been used in other classes also. Okay, so now let's see. Just let me remove this line. Okay, so now we will continue with this setup. Okay, this setup. So over OQ. So what does this OQ is actually representing? So if you will see for this OQ, you can say for this thing that is the distance of the image, and we had already done that is plus V. Next, OB. What OBs is representing? That is showing minus U is equals to over here you are having F2Q. So F2Q is not nothing over there. Okay, if you will see this this F2Q, so no any sign conventional value we had placed over there, but we can get a value. Okay, what value we can get for this one? So we can write OQ minus OF2. So instead of writing this F2Q, we can write this one. So you can see with the lines that is there. Now OF2 we know for that one. So that is plus F. Now we will just continue for this one. So V minus U is equals to OQ. So what is OQ equals to? OQ is equals to as the V. Okay, as the V over there. So that is positive minus F by F over here. So if you will cross multiply this one, so you will get V. Sorry, just a minute. Let me just correct this one. It's not V. Okay, so it is VF equals to minus UV plus UF. Okay, you got this setup. Now you just divide both the side by UVF. Okay, so dividing both side by UVF. So if you will do so, so VF by UVF equals to minus UV by UVF plus UF by UVF. Now you just cancel these values, whatever can be cancelled. So VF can be cancelled from this VF. UV can be cancelled for this UV, and this UF can be cancelled from this one and this one. So ultimately you are going to get over here, you are going to get 1 by U is equals to minus 1 by F plus 1 by V. Now you just simplify for this one, and ultimately you can get it as 1 by V minus 1 by U is equals to 1 by F. You just replace the values. You just take this 1 by F to this side, and you make this 1 by U to the other side. So you will get this one. So over here, this quantity which you are going to get, this one, that 1 by V minus 1 by U is equals to 1 by F. That is the Lens formula. So this is the derivation of the Lens formula, which is not only going to be helpful in this class, but it is going to be also helpful in your class 12. So over there, you can derive this one. So questions used to be there with relation to this. So this one was the thing which we need to understand with the sign convention. Now, with that one more thing is there which we can discuss, that the verification of this lens formula. So do this formula is correct or not? So how do we had got this one, and how this is actually present over there? So we can just do a very simple experiment, and with that experiment we can easily identify that whether the given things is correct or not. So what you have to do, you just go for the condition for the image formation. So there are so many different image formation conditions we had understood. So one of that can be helpful over here. So I will recommend go for the first one. Go for the first one. So it will be very easy for you to identify that one. So how you just need to identify that? In the first image formation, you had done this thing that the object was placed at infinity. The object was kept at infinity. So when the object is placed at infinity, then U will be infinity. Okay. So if I have this one, so in the LHS side, I will just place it over there.
So 1 by v minus 1 by u it is there. So it will become as 1 by v minus 1 by infinity. Now, for the calculation of infinity, for the sake of now, you have no value. So it will become 0. It will completely become 0 for now. So over here, when you are going to solve this one, you will get 1 by v. And what you, sorry, yes, 1 by v. And to the RHS, when you are just make it equal, so you are getting 1 by v is equals to 1 by f. So therefore, you can say v is equals to f. So what does this v represents? This v represents the position of the image form. And you please remember the thing what we had studied earlier. When the object is placed at infinity in front of a convex lens, then its image used to form to the other side of the lens at focus. So it is forming to the other side of the lens. Thus it is in positive value and it is forming at f. So hence we can say that this formula has been verified. So this verification also used to come. Okay, so again I'm mentioning this thing that this time it is going to be MCQ, but for your further classes it is not going to be MCQ. So please be mindful for that one and remember these things. Okay, so we had understood about the sign convention today. आज हम लोगों ने sign convention के बारे में देख लिया, फिर हम लोगों ने लेंस फॉर्मूला के बारे में देख लिया, और फिर हम लोगों ने उसके वेरिफिकेशन को भी देख लिया. ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बची हुई है बिफोर वी गो फॉर द कैलकुलेशन. न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक फॉर्मूला और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और वो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन की. ठीक है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, कोई भी इसमें कोई हार्ड बात नहीं है, बहुत ही आसानी से वो बन जाएगा. सो व्हाट इज दैट? दैट इज एक्चुअली मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन होता क्या चीज है? हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है. जब हम लोगों ने मिरर पढ़ा था तब भी हम लोगों के पास मैग्निफिकेशन था. मैग्निफिकेशन असल में एक रिलेशन बताता है इमेज का साइज विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज. जो हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं उसके साइज के साथ इमेज का जो इमेज का साइज है उसका रिलेशन बताता है. सो दिस मैग्निफिकेशन इज एक्चुअली, this m is actually nothing but the direct relation between the size of the image with respect to the size of the object. तो यहां पर ये आ जाती है hi/ho. ठीक है, hi/ho का हम लोग यहाँ पर वैल्यू लेते हैं. सो दिस इज द कंडीशन. अच्छा, जब तुम लोग इसी कंडीशन को लेकर तुम लोग जब और आगे करते हो, जब तुम लोग और आगे देखते हो, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के रिलेशन को देखते हैं, तो हम लोगों ने ये प्रूफ किया हुआ है कि बाय ट्रायंगल इफ वी सी, वी नो दिस थिंग दैट triangle PQO is similar to triangle ABO. तो ये यहाँ पर सिमिलर हो जाती है. तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि PQ/AB जो होती है वो इक्वल होती है OQ/OB से, वो यहाँ पर इक्वल हो जाती है. तो यहाँ पर जब हम लोग मैग्निफिकेशन के लिए देखते हैं तो ये इस वाले वैल्यू का भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो इस वाले वैल्यू के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों के लिए जो वैल्यू यूज हो जाती है वो यूज हो जाती है v और u की. तो ये रिलेशन भी याद रखना है. तो यहाँ पर जब हम लोग ये देखते हैं तो v/u भी इसकी एक रिलेशन की वैल्यू आ जाती है. तो कोई जरूरी नहीं, जैसे अभी यहाँ पर रियल इमेज था तो इस तरह से बन रहा है, वर्चुअल इमेज बनेगा तो वहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव की साइन यूज करेंगे. तो जो जिस तरह से हम लोगों की साइन रहेगी, जिस तरह से भी हम लोगों की साइन रहती है, वो उस हिसाब से वहां पर उसका यूज किया जाता है. तो खैर, मैग्निफिकेशन जो मेनली तुम लोगों को यूज करना है वो यूज करना है तुम लोगों को hi/ho, और इसके साथ साथ v/u का भी तुम लोग मैग्निफिकेशन यहाँ पर यूज कर सकते हो. सो आई होप यू ऑल हैड अंडरस्टूड दिस थिंग. डू एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? Yes, students? No one is having any problem till here. Then it's very good. So till here only I wanted to discuss today. So is it okay? Is it okay for everyone?